नई दिल्ली 28 अक्टूबर। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण व दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज पॉश यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर जागरूक करने के लिए एक वर्चुअल सेमिनार आयोजित किया, जिसे नई दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा सलाहकार एडवोकेट श्रीमती सीमा जोशी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कामकाजी महिलाओं के अधिकार व उनकी कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न की समस्याओं पर बात की। दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ये कोशिश कि सबको उनके अधिकार व कानून की जानकारी हो, एक सराहनीय प्रयास है। So today we are doing the POSH. This is kind of a latest law on a sexual harassment of a women at a workplace. So sexual harassment actually start from the birth. अगर बेटा पैदा हुआ है तो हमको लगता है उसको कुछ गाड़ी गिफ्ट करें, like we gift him car, blue colors, and if there is a girl, then the pink, peach, red, like her toys is like doll and all. So this is start from the beginning, the gender inequality. And what had happened after, like what we need from the beginning, the gender sensitization is very important. The process in which people of all genders are taught to be respect everyone irrespective of gender by acknowledging the differences. तो हमको सबसे पहले from the beginning we have to teach our son as well as our daughters both to respect each other's gender. Even now we can talk about the neutral genders also or the binary genders. So that is required from the beginning of the childhood. And again, this problem is with this video also. This video actually tells us, this is basically a perception about the gender. Normally what happened, what we think, कि अगर nurse है तो वो female होगी, that cannot be a male. अगर doctor है, that will be a male or a female, but nurse में हमारा perception है no, nurse cannot be a male. Or like suppose air hostess, maybe most of the people say air hostess only a female, cannot be a male, or it's very difficult to digest things that these are the things. So basically this video is also, I'm going to share this video separately. Just a sec, wait, if I can. Guys, how many of you know about Vanita, this POSH? is visible? POSH. It stands for Prevention of Sexual Harassment. Did you know that we have a specific law in place so far as prevention of sexual harassment at workplace is concerned? It is called Sexual Harassment at Workplace Prevention, Prohibition, Redressal Act 2013, or in short, the POSH Act. So why did we need this law at all? Well, according to recent statistics, 53% Indian women have been subjected to sexual harassment at workplace at different points in time. This means that more than half of our female workforce has been subjected to sexual harassment of some kind at workplace. This can range from inappropriate touching, lewd remarks, gestures, lewd jokes, etc. And these numbers are only from the organized sector. According to the POSH Act, every workplace which ranges from the government sector to the private sector and has more than 10 employees is required to have a POSH redressal mechanism in place. Now, this includes government companies, PSUs, shops, outlets, all of the above. Now, what is this POSH redressal mechanism? It means having a POSH policy in place, having an IC in place, and conducting regular awareness initiatives within the workplace. So what is this IC? IC is an internal committee which is set up well within the workplace to deal with complaints of sexual harassment. The IC is required to have at least 4 members, 50% of which are required in law to be female. The head of the IC is also required in law to be a female. Now, there is a certain procedure that the IC is required to follow. So what is the best part about the POSH Act? The IC is required in law to finish the inquiry within 90 days, maintain stringent confidentiality, and make sure that principles of natural justice are followed. Also, a woman subjected to sexual harassment at workplace can simply file a complaint of sexual harassment against an employee of that workplace with the IC itself.
She did not go to the police, file an FIR, and wait for the painstaking route of tariq pe tariq litigation procedures. So, what is the point of the POSH Act? The parliamentarians intended that the female workforce is protected and retained at work. So, what if your workplace does not have an IC? Well, non compliance under the law by a workplace which has more than 10 employees can attract a penalty of up to crores. However, if you do not have an IC in your workplace, fear not. You can go to the local committee of your district, which is set up under law. A woman may also go here and file a complaint if she works in a place where there are less than 10 employees and an IC is not needed under law. Apart from this law, the government has also started an online portal called the She Box. Any woman who has been subjected to sexual harassment can go online and file a complaint, and the government is bound to take it up. Usually, the concerned government redirects this particular complaint to the concerned IC or LC. Create safe workplaces and make sure your workplace is POSH compliant. Gender sensitivity. Vinita, this is visible? A patient is talking to his male nurse. Vinita, this is visible? All your vitals are fine for now. You will be better by next week. Thank you, doctor. I'm not your doctor. I'm the nurse. Really? I thought only women could be nurses. Why is that? Well, women are better caretakers. After all, they usually do the cooking, cleaning, and caring of the family. So wouldn't it make sense for them to take care for the patients and not to treat them? That is not true. Men can be good caretakers as well. And to be good husbands and fathers, they should consistently help out around the house. But shouldn't the husband have a higher salary than his wife so that he can support his family? Therefore, shouldn't men be the doctors? That is not necessary. This job pays well and it helps me support my family financially. I also feel women are more emotional, so they bond with the patients better. Men can be equally emotional as well. It depends from person to person. Times are changing. Men can take care of the house and women can take care of the family finances. She does not have to rely on a man to take care of her anymore. The traditional roles of both genders are changing, and people can now decide which role they want to play in their family. Ah, I see. I am sorry for my assumptions. That is all right. So see, this is the perception normally we have, that male can only be a doctor or male can only be the earning person, female has to take care of house. So these all are the perception which from ages we have. We need to change this perception. How we will change this perception? This perception will change by education, by educating our children from the beginning. As I said, that there should not be a difference. Like as I said, that when the girl is born, we always give her a toys like a baby doll, kitchen set, और वो घर घर खेलना टाइप जो है उनके साथ हम लोग करते हैं, जो कि हम लड़कों के साथ नहीं करते हैं. Then CEDA come into picture, Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against the Women. And what's CEDA said? CEDA talks about equality, the fundamental rights. Right of equality was reinforced by the UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, which was adopted by the UN General Assembly in 1979 and which was ratified by India in 1993. UN General Assembly में this was in 1979, but in India is ratified it in 1993. It underlines that discrimination and attack on women's dignity violate the principle of equality of rights. The Constitution of India provides equal treatment for a female and a male in every sphere of our life. As our Constitution said that every man and every woman are equal. This picture is little blur. This is the picture of 2018 and this is the picture which says the 10 countries where it is the worst to be a female.
And you will surprise, India is first, Afghanistan is second, Syria is third, like that ways. So, and there are the three unfortunate women and the three landmark legislation. I hope you all are aware of 1983, the Mathura rape case. In this, girl wanted to marry a boy, but family was against. What they did it, they captured them and brought into the police station. और पुलिस वालों ने सबको बाहर निकाल दिया and they raped that girl Mathura. And later on, उसके बाद there was one amendment in this criminal law, and this amendment act is 1983. And 2013, we all aware of the Nirbhaya, that this is a ramification of the Nirbhaya case, which is the Criminal Law Amendment Act 2013. And this act, POSH is actually an outcome of a Vishakha case or a Vishakha guidelines of 2013. This case was actually Vishakha was. Before I explain the Vishakha, I just wanted to tell you that all these kind of actions can be a sexual harassment at a workplace, like patting, glaring, touching of any kind of this kind of gesture be a the background of the law, Vishakha guidelines, जो जिसका हम बात कर रहे थे. This was the case of Vishakha and others versus State of Rajasthan and others, AIR 1997, SC 3011. The case was based on a gang rape of a Bhavri Devi, who was a social worker actually in a village. She was a Satin basically. And what had happened, she opposed the child marriage of a Sarpanch's daughter. And the result was a gang rape. And after that, what had happened, there is a one NGO which is called Vishakha. लोगों को लगता है Vishakha was the victim. No, Vishakha was the NGO of a Jaipur which came into picture, and they started fighting Bhavri Devi's case. And outcome of that case was this POSH Act and the Vishakha guidelines, the gender equality, the right of a life and the liberty, prohibition and discrimination on the ground of a religion, race, caste, creed, and a sex. Act. The act was passed by Lok Sabha on September 3rd, 2012. It was passed by Rajya Sabha on February 26, 2013. The bill got assent of the President on April 22nd, 2013, published in the Gazette on April 23rd, 2013, and the act came into force in December 9, 2013. That is called the Sexual Harassment of Women at a Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. In short, we call it POSH. Objective of the Act. The objective of the Act to provide protection against sexual harassment of a women at their place of work and for the prevention of a redressal of the complaint of a sexual harassment and for matter connected therewith an incidental thereto. So idea क्या था कि इस एक्ट को लाने का आइडिया ये था कि ये सब पर अप्लाई है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इवन आपके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक सर्वेंट पर भी ये एप्लीकेबल है. इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. सो आइडिया ये था कि इसका एक इंटरनल मैकेनिज्म सिस्टम हो जिसको कि हम एड्रेस कर सके. विमेन्स सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज हैं, उसका प्रिवेंशन के साथ साथ उसका स्पीडी रीएड्रेसल भी हो. एप्लीकेबिलिटी ऑफ जो लॉ की बात हम करते हैं, द लॉ अप्लाइज ऑफ द एंटायर इंडिया, applies to all establishment irrespective of number of employees, gender of employee, industry, place of operation, legal status of the establishment. Who is the aggrieved women? In relation to the workplace, a women of any age, whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of a sexual harassment by the respondent in relation to a dwelling place or a home, a house, a women of any age who is employed in such a dwelling place or a house. जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक सर्वेंट है, अगर उसके साथ भी उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, she can also go for this. In her case, she has to go for LC, local committee, or in organized sector or unorganized sector where there is a more than 10 people, their IC is required, so they can go for their internal committee.
Again, the aggrieved women की definition, the working women visiting, like suppose लोग कहते हैं कि एक शॉप के अंदर एक औरत आई, अब वो तो विजिट कर रही है, तो उसको कैसे, तो that women is also covered. Suppose एक establishment है जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, वो 10 के 10 मेल हैं और वो फीमेल अगर वहां आती है और उसके साथ अगर किसी तरह का हैरेसमेंट होता है, that women is also covered. Students are covered, domestic workers are covered, regular, temporary, ad hoc, daily wages are also covered, and remuneration, voluntarily basis or otherwise also covered. Employed directly or through agent are also covered. Even contractual laborers are also covered in this. And contract worker, prohibited training, apprentice, called by any other such name, are covered in this. The workplace defined is like any government, semi-government, PSUs, corporations, institutes, the private sector organization, foreign company having office in India, hospital or nursing homes also cover in this. The sports institute, complex or stadium or wherever you do practice, that also cover in this. Any place visited by employee assigned out of during the employment, like suppose किसी को अगर ये कहा जाए कि आप 2 लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल, और आपको एक असाइनमेंट के लिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए या एक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको बॉम्बे भेजा जा रहा है, और वहां पर उस लेडी के साथ अगर किसी तरह का कोई ऐसा हैरेसमेंट होता है जिसको जो उसे फील होता है कि वो अनवेलकमिंग है और हैरेसमेंट है, दैट विल आल्सो कवर्ड अंडर दिस, एंड अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस. What is sexual harassment? Sexual harassment is unwelcome sexual advances, request or a sexual favor, aid or other verbal, visual, physical contacts of a sexual nature where submission to or rejection of a subject, such conduct is made either explicit or implicitly a term of a condition of an individual employment. Submission to or rejection to such conduct by an individual is used as a basis for employment decision affecting that individual, or such conduct that has a purpose of or effect of unreasonably interfering with an individual's work performance or creating intimidating or hostile or offensive work environment. If anyone, any lady feel that there is a hostile environment against her, offensive environment, intimidation is there, उसके काम में unnecessarily interference हो रहा है, that can also covers under the sexual harassment kind of activity. This is another video which I would like to share with you. Just wait for. चाय कम होती जा रही है विशु. अरे क्या सिंह साहब आप भी बहुत बदन दर्द कर रहा है, कोई बादाम की दूध पिला दे. साले तुम्हारे सही है, बीवी बच्चे घर पे, खुद वहाँ सपना होटल में बसे ले रहे हो. पता तो आप ही ने दिया था भैया. हाँ पर हम तो यहाँ सूखे बैठे हैं, तुम तुम्हारा कुएं में डुबकी मार रहे हो. अपनी मुड़ोना को लेके आ जाओ यहाँ पे. अरे कहाँ, 10 साल की बेटी का बापू. हाँ जी हाँ. वैसे ये होटल वाले बोल रहे थे किसी की हरी चटनी छूट गई यहाँ पे. अरे भागो तुम, बदतमीज. चलो रखो हमें. अरे सुनिए तो. अभिजू जी सर. अपनी मुड़ोना पूरा सर. जी मीनाक्षी मैडम. शर्मा. हाँ सर. अरे वो अग्रवाल क्रशर का क्या हुआ? सर मैंने कल आपको फाइल दी तो थी. अच्छा तो देखो यही रखी होगी. बैठो. नहीं सर ठीक है. सर ये क्या लगा के हो, महक जा रही हो. सर ये जो रिन्यूअल पेपर्स हैं इसमें दोनों पार्टनर्स के नाम हैं और नीचे सिग्नेचर्स भी हैं. ये सतीश अग्रवाल, ये सुधांशु. ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अप्रूवल और ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर्स. सर प्रॉब्लम हो रही है कि सतीश अग्रवाल अभी साइन करने से क्या हुआ सर? क्या
आप कुछ देख रहे हैं? मतलब मेरे बूब्स देख रहे हैं? अरे तो देखिए ना अच्छे से, ये देखिए। ए, नाटक बंद कर। अरे नहीं सच में सर। वैसे भी आप आधे टाइम तो मुझे देखने के लिए ही बुलाते हैं, तो एक बार अच्छे से देख डालिए। ये फिर बहुत पछताएगी तू। अरे सर सीरियसली। अच्छा मैं ये उतार देती हूँ, है ना? सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दीजिए ना। मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं है, सेम ही होता है सबका। हाँ बस साइज थोड़ा ऊपर नीचे होता है बस। वैसे भाभी जी का क्या साइज होगा? 34 ना, या 36? आपको तो पता ही होगा सर। I'm sorry. प्लीज बैठो तुम। नहीं माना मेरी स्किन थोड़ी मुलायम है, लेकिन मलाई थोड़ी ना है सर कि जब आपका मन चाहा आपने चम्मच डुबाया और चाट लिया। अरे शर्मा जी तो शर्मा गए। सर आपके डर से तो मैंने स्लीवलेस पहनना भी छोड़ दिया है। So this is the idea of this sharing of this video is actually this is the time to speak up. अब ये टाइम नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, because you are the victim, you are not the one who did the offense, you are the victim. So this is the time when women has to speak up. और ये जो आईसी और एलसी जो बनाई गई हैं, लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी, आइडिया ऑफ दिस कमेटी इज कि आप आके अपनी बात यहाँ कहिए, आप अपनी बात को एक्सप्लेन कीजिए, और डेफिनेटली ये कमेटीज उस पर एक्शंस लेंगी और एक्शन अप्रोप्रिएट होगा, जैसा भी रिक्वायर्ड होगा उस सिचुएशन के अंदर, उस उसमें। और अगर उनको ये लगेगा कि ये एक्ट ऐसा है जहां पर कि पुलिस को इस केस को देने की जरूरत है, तो उस केस के अंदर विद इन 7 days आईसी को वो कंप्लेंट जो है वो क्रिमिनल एक्ट के अंदर वो पुलिस को देनी पड़ती है। आजकल हमारा एक न्यू नॉर्मल है वर्क फ्रॉम होम, जैसे आज भी हम वर्चुअल कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम ब्रिंग अ वर्चुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट होम टू। What is this virtual sexual harassment? Work from home is a new norm. The coronavirus pandemic, as you know, तो अभी इससे हुआ क्या है, जैसे I'll give you one example here कि सपोज आप का एक ऑफिस का मीटिंग चल रहा है और ऑफिस की मीटिंग के अंदर आपके मेल फीमेल दोनों ही तरह के कुलीग उसको ज्वाइन करने वाले हैं, और कोई मेल कुलीग अपने पीछे कोई ऑफ सीन पोस्टर या ऑफ सीन पिक्चर या वो खुद बेयर चेस्ट बैठे हैं, तो ये सब चीजें हैं काइंड ऑफ अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सी अगर मान लीजिए आपके पीछे एक स्टैचू खड़ा है जिसने बिकनी पहना हुआ है, और अगर आप स्विम सूट या आप इस तरह के बिजनेस में हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट इफ यू आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस, इफ यू आर पुटिंग इट पर्पसफुली, और आप अपने फीमेल कुलीग को बोलते हैं कि लेट आवर्स में कॉल कीजिए, या आप उनको वीडियो कॉल करने के लिए फोर्स करते हैं, तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ वर्चुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर आप सब लोगों को याद हो, यू ऑल आर अ लॉयर, यू माइट हैव अवेयर, इनिशियली जब वर्चुअल चालू हुआ था तो बहुत सारे कोर्ट स्टाफ की एक कंप्लेंट आई थी कि दे आर गेटिंग फोन कॉल्स ऑन अ late hours or even video messages and all. So then DJ Saab has issued one kind of a notification कि late hours में office hours के बाद they should not be answerable to they should not answer the phone calls or take up the phone call. So virtual sexual harassment, what can be constituted as a virtual sexual harassment? Personal comment on your person social media, suppose आप ऑफिस में है तो सेम आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में उन्होंने एक कमेंट कर दिया आपके बारे में, इनअप्रोप्रिएट इमोजी भेज दिया, मींस किसका इमोजी, हक का इमोजी, जबकि आपका उस तरह से रिलेशन नहीं है, या वो आपको स्टॉक कर रहे हैं बोथ फिजिकल और वर्चुअल, थ्रेटनिंग अबाउट परफॉर्मेंस रेटिंग, मींस अगर वो आपके बॉस है तो वो कहता है अगर आपने मेरा ये नहीं किया देन आई विल do your performance rating will be little lower and this and that. So instead on the video call,
and well after office hours, inappropriate of a sexual joke to lighten up the mood, not maintaining the dress code during the video conferencing and call, and undefined working hours, inappropriate comments about someone appearance like अरे तुम तो बहुत मोटी लग रही हो, या वो ड्रेस पे तुम बहुत अच्छी लगती हो या सेक्सी लगती हो, इस तरह के कमेंट्स को करना, that will also fall under the sexual harassment, physical and virtual in both. Harassment via work channel, like आपका कोई WhatsApp ग्रुप है, उस ग्रुप में आपके बारे में कुछ लिख देना, कह देना, unprofessional behavior and a conduct, force video call, like आप अपने women colleague को कहें कि अब रात को 10 बजे मुझे वीडियो कॉल पे तुमसे कुछ अर्जेंट बिजनेस डिस्कस करना है. So all these falls under the virtual sexual harassment. What we can do to make home safe again? So as a CEO, like because this PPT I made for one company, so basically जो भी company के जो भी head हैं, जैसे हम अगर हम अपनी लीगल फ्रेटर्निटी की बात करें, PSLSA की बात करें, तो सुमित सर है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन को जो देख रहे हैं, वो लोग उसके जो इंचार्ज हैं या जो HR देख रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करें कि जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे. ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉलिसी चेंज, क्योंकि अब पॉलिसी जो है अपनी हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, पॉश की पॉलिसी. अब जब पिछले हम 18-20 महीनों से हम वर्चुअल कर रहे हैं, तो उनको अपनी पॉश पॉलिसी के अंदर अमेंड करने की जरूरत है. वर्क फ्रॉम होम जो उनकी पॉलिसी है, उसके क्लॉजेस उसमें ऐड करने चाहिए, उसके डू एंड डोंट्स ऐड करने चाहिए. And it is challenges that state clear rules about acceptable behavior while working from home. उनको अपनी जो डूज एंड डोंट है और जो पॉलिसी में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए. What is acceptable, what is not acceptable. Like suppose you are attending a meeting, a formal meeting, and sitting with the like your Adi Baju wala t-shirt or something, it is very obscene kind of a thing, which is not acceptable. It has to be clear. Disseminate information. Sorry. Is like a long term. Disseminate the information about the changes made to the POSH policy. उनको ये बताना चाहिए कि उनकी जो POSH policy है उसमें उन्होंने क्या अपडेट अभी किए हैं, वो अपडेट्स को अपने सारे एम्प्लॉइज के साथ शेयर करना चाहिए. उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जिस भी मोड से वो उनको दे सके वो उनको देना चाहिए. Conduct specialized POSH training for the managers and POSH awareness training for employees. Make sure that include lots of example of what is not acceptable and allowed. जैसे मैं यहाँ पर आपको एक कंपनी में क्या हुआ, एक लड़की थी, उसको क्या होता था, रोज उसके मॉर्निंग में जब वो ऑफिस आती थी उसकी टेबल के ऊपर एक रोज रखा होता था. अब रोज रखना is not an harassment, but she made a complaint. She said, if I will not raise my voice, then tomorrow everybody will think that I am available. तो दिस इज ऑल्सो लाइक आपको डूज एंड डोंट्स जो हैं वो पहुंच के वो जो मैनेजर्स हैं, फिर मैनेजर्स के बाद जो एम्प्लॉयज हैं, वो उनके साथ आपको शेयर करने चाहिए और उनको हर टाइम, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े इंटरवल के बाद उनको अपडेट करते रहना चाहिए. ट्रेन द पॉश कमेटी मेंबर्स. इवन जो पॉश कमेटी है उसके मेंबर्स की ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट about the POSH Act as well as like नेचुरल जस्टिस का जो ट्रेनिंग है वो एक जरूर होना चाहिए. कभी इमोशनल होकर कभी ऐसा जजमेंट नहीं हो कि वन साइडेड हो जाना है, उनको नेचुरल जस्टिस को मेंटेन करना है. The POSH committee member on how to handle inquiry virtually, let them not have a group of a dog when suddenly a complaint catches them ill prepared for a much hyped new normal. An investigation needs detailed fact finding besides a ton of documentation to following up SOPs, but let them not start scratching for the SOPs after the committee strike. That would be the calamity by itself. Means कभी अचानक से कोई कंप्लेंट आए और उसके बाद आपकी जो IC कमेटी है या जो पॉश कमेटी है वो देख रही है हमारे SOPs क्या हैं, क्या कहता है, हमें क्या करना है, वो सब नहीं होना चाहिए. उनका एक जो एवरी इंटरवल उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता रहना चाहिए. फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन अ वर्क प्लेस. तो दिस वन इज अ वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट. एंड वर्बल में द थिंग्स फॉल इज अनवांटेड रिक्वेस्ट फॉर अ डेट, सेक्स etc, क्वेश्चंस अबाउट पर्सनल लाइफ लाइक तुम कब बच्चा प्लान कर रही हो, या how is your sex life is going on, or anything which is very personal.
lewd comments like a sexually inappropriate kind of a comment, dirty or sexual jokes, whistling. So the two male co-workers are constantly teasing with the dirty jokes. Even when women are within hearing distance, their joke range are being mildly crude or downright vulgar. A female co-worker has tried to tell them to stop, but they tell her, "It is just a joke. Cannot you take a joke? It is not just a joke." Since she is clearly stated that she wanted them to stop, they should at least have the courtesy to sharing their jokes in private. This is kind of a verbal harassment. Like अगर आप सोचें कि दो लोग एक डिस्टेंस पे खड़े होकर बात कर रहे हैं और एक लेडी जो है वो is मतलब hearing distance पर है, she can hear what all you are talking, and if she says please stop, I don't like it, so you have to stop. If you are not stopping, this is kind of a verbal sexual harassment. There is called a physical sexual harassment, where touching, violating space, petting, grabbing, pinching, teasing, kissing. A male co-worker or a boss sometimes gives a lady clerk a pat on the shoulder as a way of saying she has done a good job. Lately, however, the action has become more physical, resting his hand on her, putting his arms around her shoulder, occasionally brushing her against her accidentally. This is a physical, like मीन्स जैसे नॉर्मली होता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि बॉस से आए साइड से कंधे पे हाथ रख दिया, या इवन इवन योर कलीग आल्सो डज द सेम थिंग. सो अगर इनमें से कुछ ऐसा होता है, दिस इज falls under the physical sexual harassment. Then there is a visual sexual harassment. There's ogling, staring, postures, magazines, flyers. जैसे मैंने पहले बात किया था कि वो एक आपके पीछे एक फ्लायर है जिसने स्विम सूट पहना हुआ है. If you are not in the business, and if it is there, then it is in a visual harassment. But if it is you are in the business and it is lying there, then it is not in a sexual harassment. A male co-worker or a superior has a calendar and a picture of a really clad women and suggestive poses placed prominently in his work area. Women workers are embarrassed whenever they have to speak with him in his office and have mentioned their discomfort to him. He says nothing wrong with these pictures, however, arguing that it is free country, not when pictures are indecent or obscene. This is a visual sexual harassment. So this is called a visual sexual harassment. Then there is a psychological sexual harassment, like unwanted love poems, unwanted love letters, obscene poems, unwanted cards. Like I said now that rose wala example. So this is like, this falls under this. So a male co-worker or a superior has shown the interest of a female co-worker, but she is not keen on accepting his date and have openly and clearly made known her disinterest and disapproval. Yet he persists, showering her with the sign of an affection by leaving flower on her table, dropping hints and finding way to be alone with her, even making hidden threats. So this is called psychological harassment. Sexual harassment is basically any action, gesture, word, look, etc. with the sexual flavor amount of a sexual harassment. Such action makes the female uncomfortable. Any action जिससे female uncomfortable है, if she is uncomfortable, it is not necessary कि वो act sexual था या नहीं था, but she felt uncomfortable. That is more than sufficient. The feeling of a complainant is inappropriate. The impact of important, not the intention. As I said, intention आपका important नहीं है, उसका impact क्या है वो important है. Harassment other than the sexual, what all other kind of a harassment can be at a workplace? Harassment on a race, religion and caste base, harassment on a age, disability, defame or damage the reputation or a image. Criminal history, मान लीजिए कभी किसी का कोई criminal past रहा हो, like आजकल जैसे बहुत common है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है, 498A हो गया और ऑफिस में आपको पता चल गया, आपने उस पर करना शुरू कर दिया, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ एन हैरेसमेंट, बट दिस विल नॉट फॉल अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट. हैरेसमेंट ड्यू टू द डिफरेंट पॉलिटिकल बिलीफ, जैसे आजकल चल रहा है कांग्रेस बीजेपी या कोई भी पार्टी के बीच में आप लड़ना शुरू हो जाते हैं और उसमें एक दूसरे को डिफेम करते हैं, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ हैरेसमेंट. सेक्सुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस, आप किसी की मैट्रिमोनियल लाइफ के बारे में बात करना या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कि वो he is a gay or he is a lesbian, she is a lesbian or like that way,
that is also as a kind of a harassment. Discrimination among equal, bullying by the superior or the manager. So this is the case, Santa Kumar versus CSIR Delhi High Court, 31/10/2017 का केस है. आप लाइव लॉसेस की डिटेल निकाल सकते हैं. इस केस में हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट थे लैब के अंदर, एक लड़की थी जो कुछ टेस्ट वगैरह कर रही थी. तो उनको ऐसा लगा कि इन्होंने हम जो रिसर्च कर रहे हैं, इस रिसर्च की डिटेल बाहर शेयर करी है, और वो गुस्से में अंदर आए और उन्होंने वो टेस्ट ट्यूब वगैरह लेकर उनके हाथ से नीचे फेंक दिया और उनको वहां से जाने के लिए बोल दिया. लेडी फाइल्ड अ केस. सो कोर्ट का जो निकल के आया उसमें ये था कि देयर इज अ नो सेक्सुअल इंटेंट, देयर is a misbehave, there is a like a kind of a misconduct, but it's not a sexual harassment from his side to her, so that case be a disciplinary case, not a sexual harassment case. There is a two type of sexual harassment which is legally organized. One is a quid pro quo and there is a hostile work environment. A Latin term meaning this is for that occurs when the harasser is in a position or authority over the person being harassed. The quid pro is like, suppose मैं ये कहूँ कि अच्छा तुम मेरा ये काम कर दोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हारा ये कर दूंगा या कर दूंगी. So this is a quid pro quo. But hostile work environment means कि it occurs when physical, verbal, visual harassment in a severe, pervasive enough to create a hostile or an abusive working environment. Comment about ladies' body, clothes, dresses, sexual remarks, touching, tapping. Hostile work environment does not necessarily involve a person in a position or authority. इसके लिए quid pro के लिए person needs to be an authority. Like suppose if somebody is a superior, then only he can do some quid pro ना. इसके बदले वो. लेकिन but for the hostile work environment, it is not necessary that person has to be an authority. आपका कोई कुलीग है, मान लीजिए आपके बैठने की सीट, अपना कचरा निकाल के आपकी तरफ डाल दिया, अपनी फाइलें एक्स्ट्रा उठा के आपके टेबल पे रख दी, तो these all or many other things can be a sexual this hostile work environment. Maybe little blur, but this is a sexual harassment case reported in BSc 100 companies. ये 2019 का है, जो BSc में registered 100 companies हैं, उसमें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस रिपोर्ट हुए थे, 41 विप्रो रिपोर्टेड द बिगेस्ट जंप इन नंबर ऑफ अ कंप्लेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2019 में. सबसे ज्यादा जो जंप आया था वो विप्रो के यहाँ था. एंड द 50% ऑफ द maximum complaints are on this financial year of 2019 are reported by Ultratech, Indian Oil Corporation and Hindalco. So 2018 में it was 722 and 2019 में it was 823. The sexual harassment at workplace is 25 to 85% of women reported having experienced sexual harassment in a workplace. Either way, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, but है. And one of the four people are affected by the workplace sexual harassment. Effect of a sexual harassment. What actually the effect of the sexual harassment is like a depression, anxiety, shock, denial, anger, fear, frustration, irritability, insecurity, embarrassment, feeling of betrayal, confusion, feeling of being powerless, shame, self-consciousness, low esteem, guilty, self-blame, isolation. Like एक मेल कोलिग ने आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, या नॉर्मली हम जैसे देखते हैं रेप के केसेस में भी जो विक्टिम होती है वो डिप्रेशन में चली जाती है, वो फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है, वो अपने आप को कमजोर मानने लगती है, वो अपने आप को पावरलेस मानने लगती है, उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो कमजोर होने लगती है, उसका सेल्फ लो एस्टीम हो जाता है, अपने आप पे शर्मिंदा होने लगती है, गिल्टी फील करती है. तो सिमिलरली सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में विमेन के साथ अगर ऐसा वर्क प्लेस पर होता है तो उनके साथ भी ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स पॉसिबली होते हैं. So what is the complaint committee? Under the POSH Act, the complaint committee is must. So in every establishment, if number of the employee are 10 or more, then the internal committee, which is called IC, is like internal complaint committee, is mandatory. Every district must have a local committee, which is called LC, to be constituted by district collector. Every aggrieved women to approach its IC, हर जो प्रताड़ित महिला है उसको आईसी के पास अप्रोच करना है. लेकिन अगर वो 10 से कम है, जैसे लाइक
a domestic servant or somebody is like that, then they can approach to the LC. In case of no IC or unrecognized sector, the appropriate is LC. If the complaint is against the chairman, top bosses of the establishment, then LC is to be approached. Up committee ka the formation of the committee is, one is the presiding officer, which has to be mandatory of women, two employees from the organization, and one is from the NGO. The total composition requirement is 4, but I always suggested a 5-member. Reason behind it, like if suppose at some stage there is a tie, then unlike other, this presiding women officer is not having a additional vote right. So it is always be better you constitute your committee of a 5-member instead of a 4-member. This is for the corporate sectors and all. Higher educational institution ka policy alag hai, which is we are not going to discuss it much. This is for the higher education. Unka workplace like college, library, canteen, all these things are. In Industrial Employment Act में भी है. Then we will talk about the local committee. Committee constituted by the district collector, the 5-member. The normally corporates के यहाँ पे 4 है क्योंकि वो act के requirement 4 है. But collector का जो LC committee वो जो appoint करते हैं, that is a 5-person committee. The one is a chairperson, is a women member of the local municipality. Like suppose if we are talking about Delhi, तो दिल्ली में उस local municipal area से ही एक women ली जाएंगी. 2 members from the NGO, one must be a woman. Means one can be a male, but one can be a woman. Social welfare officer और ex officio member, जो भी ex officio member होंगी, उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा. Then external member, any person जो IC के अंदर जो होते हैं या जो LC के अंदर जो एक external member जो NGO से आते हैं, any person from NGO working for a women upliftment, any person from an association working for a women cause, any person familiar with the issue of a sexual harassment will be the part of the as an external member. The tenure of a LC or IC, the 1/2 of the total number should be women. The presiding officer and the member of IC and LC shall not hold office for the period of 3 years. However, the presiding officer or a members can be replaced or removed if found. Contraventions, the provisions regarding maintaining confidentiality. Confidentiality POSH Act का सबसे important part है. IC और LC को confidentiality, like who gave the complaint, किसके against में complaint है, वो सबको बहुत confidentially रखना mandatory है. Convicted for any offense on an inquiry is pending for an offense under any law in force, has found been guilty under disciplinary proceeding or disciplinary proceedings are pending, has abused in his position in office so as to his continuance in office in prejudicial or public interest. IC and LC are mandatory. The Bombay High Court decided on 13th October 2017 the LC or ICs are mandatory. Telecom company Vodafone has been slapped with a fine of 50,000 rupees for non-compliance of the Vishakha guidelines because they have not formed their IC on place. So that was the reason they have been fined by 50,000 rupees. While nothing that such a committee was a place is currently a Bombay High Court bench comprising Justice A. Saeed and a Justice M.S. Karnik observed, though we are not inclined to direct payment of a compensation to the petitioner by the respondent number 1, as indicated earlier, we do note here that the respondent number 1 had not followed the guidelines laid down by the Supreme Court in Vishaka, as there was no complaint committee constituted by the respondent number 1, like Vodafone, at the relevant time. So that was the reason. So it is mandatory for all the establishment to have the IC. If it is not, then they can be imposed by fine. Duty of the IC. The duty of the IC is to meet every quarterly, preferably to check the updates of the policy. अगर policy में कुछ changes हुए हैं, so they have to update that policy, to discuss about the awareness level of in the organization. वो Q&A करके भी organization में अपना awareness जो है वो लगा सकते हैं, awareness program कर सकते हैं.
conduct an inquiry of a sexual harassment complaint, to take care of rumors in the office. कई बार ऑफिस में जो rumors होते हैं उस पर भी उनको थोड़ा सा नजर रखनी होती है. Prepare and assist management to submit annual return, means जो उनकी annual report होती है उसमें IC की ये जिम्मेदारी है कि वो मैनेजमेंट को असिस्ट करे कि कितना कंप्लेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट का रिसीव हुआ, कितना में क्या प्रोसेस फॉलो किया गया और उसका आउटकम क्या रहा. कंप्लेंट कमेटी को जो कंटेंट देखने होते हैं या जो कंप्लेनेंट को जो कंटेंट अपनी कंप्लेंट में देने होते हैं वो है टाइम, एट व्हाट टाइम इंसिडेंट हैड हैपेंड, द डेट, वर्क रिलेशन, मींस जिसके खिलाफ वो शिकायत लगा रही है वो उनका वर्क रिलेशन है या नहीं है, कि उसका नाम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट. सपोज अगर मान लीजिए आपने कहा कि हम अपने कोर्ट का एग्जांपल लेते हैं, 10 से 5 हमारे हैं और आप अपने घर से आते हैं, या हम एक ऑफिस का एग्जांपल ले लेते हैं. एक ऑफिस में एक मेल और एक फीमेल कुलीग है. मान लीजिए कि वो एक पर्टिकुलर मेट्रो स्टेशन से 7 मेट्रो लेकर आते हैं और जाते हैं और उसी में किसी एक दिन उनके साथ किसी तरह का हैरेसमेंट हो जाता है, so she cannot file a complaint. Reason behind is because it is not asked by office to commute with that particular person. It is her personal choice. So, लेकिन अगर यही इंसिडेंट अगर कंपनी कहे कि हम आपको एक कार दे रहे हैं जो तुम दोनों को पिकअप करके लेकर आएंगी और उस वक्त कोई इंसिडेंट हो जाता है तो then this will fall under the sexual harassment at workplace POSH में. The complaints. An aggrieved woman may make a complaint of a sexual harassment in a writing either to the internal committee as applicable. Complaint be made within the period of 3 months of the incident. Incident से 3 months के अंदर उनको complaint अपना देना होता है. In capacity of a woman, the complaint can be filed by the relative, friend, any person having knowledge of the incident. In case of the following: physical incapacity, mental incapacity, death of the complainant due to any other reason. अगर कोई ऐसा इनमें से कोई सा भी रीजन है तो ये लोग उसकी शिकायत दे सकते हैं. फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक शी बॉक्स बनाया है. लाइक देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जहां से 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं, या उनको लगता है हम आईसी तक जाएंगे, पता नहीं आईसी हमारा सुनेगी या नहीं सुनेगी. सो दे कैन file their complaint directly online. That is called she box. Ministry of Women and Child Development का है, की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है. जब आप शी बॉक्स में जाते हैं तो वो आपसे आपका जब शी बॉक्स खुलेगा तो आपसे पूछते सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड देयर आर अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर. Then you have to fill all your detail and submit. When you will submit, then status of your complaint, you can check your status of your complaint here. In procedure of filing a complaint shall include 6 copy with the supportive document. जैसे हम कोर्ट में फाइल करते हैं ना, supportive documents are required. The complaint committee should send 1 copy to the respondent within 7 working days to get a reply. So जो respondent है या जो जिसके अगेंस्ट शिकायत है, कंप्लेंट कमेटी को, आईसी को, उसको 7 डेज का वर्किंग डेज का टाइम देना होता है अपनी बात को रिवर्ट करने के लिए, अपने रिप्लाई को फाइल करने के लिए. द रिस्पोंडेंट हैज टू फाइल हिज रिप्लाई विद इन 10 वर्किंग डेज. यानी कि पहले 7 दिन के अंदर अंदर उसके पास रिप्लाई कॉपी पहुंच जाना चाहिए कंप्लेंट का, और अगले 10 दिनों के अंदर अंदर उसका रिप्लाई जो है वो कमेटी के पास आ जाना चाहिए. द कंप्लेंट कमेटी हैज टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल जस्टिस. Natural justice has to be followed by the committee. If prima facie criminal case exists, suppose means किसी में prima facie लगता है कि अब ये criminal case है, तो what IC has to do? If the complaint disclose the criminal offense, the committee should pass on a complaint within 7 days to the police for a criminal action under IPC. तो उस सूरत के अंदर IC को within 7 days वो complaint जो उन्होंने receive करी है कंप्लेनेंट से, वो लोकल पुलिस स्टेशन को दे देनी होती है. क्रिमिनल कैन बी चार्ज अंडर आईपीसी 509 और जो भी एप्रोप्रिएट सेक्शंस होंगे उसमें. सेक्शन 509 वर्ड, जेस्चर, एक्ट, इंटेंट एंड इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन. Whoever intending to insult the modesty of a woman utters any words, make any sound or a gesture to exhibit any objects intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such women
or intrudes upon the privacy of such women, one shall be punished with a simple imprisonment for the term, which may extend for 3 years, and shall also with fine. Prohibits disclosure of identity. Prohibits disclosure of the identity and address of the aggrieved women to respondent and the witnesses. आईसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विक्टिम की आइडेंटिटी, उसका एड्रेस, उसका कोई भी पर्सनल डिटेल ना तो रिस्पॉन्डेंट के साथ और ना ही विटनेसेस के साथ शेयर करे. Anyone who discloses the name and identity of the aggrieved women or the witnesses will be liable to pay the penalty. अगर कोई आईसी मेंबर ऐसा करता है, और इवन आईसी नॉन आईसी मेंबर भी अगर है, अगर वो उस एस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉय है और पता चल जाता है कि उसने ऐसा किया, उसकी नॉलेज में था और उसने ऐसा किया है, then they also have to liable to pay the fine of 500,000 rupees. But information regarding the justice secured to any victim without disclosing the identity can be publicized. Like अगर आपको ये चेक करना है, मान लीजिए एक लड़की है, उसने एक कंप्लेंट लगाई है Z के खिलाफ, तो आपको पता करना है कि Z का, तो विदाउट मेंशनिंग कि क्या हुआ है, अच्छा ओके ये कैसा है, वो कैसा है, उसी के बीच में आप उसके कैरेक्टर, उसके कंडक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, बट विदाउट मेंशनिंग द नेम or the incident. Right of the complainant prohibits disclosure of the identity and address to the aggrieved women, respondent and the witnesses. Anyone who discloses the name, which I have said earlier, but information, this is interim measures जो हैं वो मैं बताना चाहूंगी. During the course of inquiry, the complainant may request for her transfer or respondent transfer. Witness जो है, complainant जो है वो या तो सपोज अगर एक ही ऑफिस के 2 ब्रांचेस हैं या 2 डिपार्टमेंट्स हैं, तो she can ask either her transfer or the respondent transfer. Leave up to 3 months. 3 months का जो लीव है, that is without any salary cut, and restraining respondent or a supervisor supervise a work or writing appraisal. अगर मान लीजिए वो सीनियर है जिसके अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेंट की है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर जब तक वो कंप्लेंट सेटल नहीं हो जाती है, जब तक उस कंप्लेंट के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, तो she can request to the IC that restrain that supervisor or the manager to to supervise her or to write her appraisal. कमेटी में रिकमेंड एंड ऑल ऑफ द अबव और मेजर्स, और कमेटी के पास ये पावर है कि वो ये सारे भी रिकमेंड कर सकती है और किसी एक को भी रिकमेंड कर सकती है. राइट ऑफ द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट का जो राइट है उसको पेशेंट हियरिंग मिलनी चाहिए, नॉन बायस हियरिंग मिलना चाहिए. रिस्पोंडेंट कह सकता है कि मुझे सेटल नहीं करना है, मुझे इसको अपने 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 अपना जो प्ली है वो मुझे रखना है, और उसके पास राइट टू अपील भी है. Responsibility of the committee, meeting with the proper quorum, minimum 3 members हर मीटिंग में होने चाहिए, to provide patient non-biased hearing to both the parties, दोनों parties को patient का non-biased hearing होना चाहिए. Be aware of all provision of the law, rules, service rules, etc. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, अगर गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स क्या कहते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके जो रूल्स हैं, सर्विस रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं उसका, और पॉश और पॉश से रिलेटेड लॉस की जानकारी आपको होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट अबाउट द ऑप्शन ऑफ सेटलमेंट. कंप्लेनेंट को आपको बताना चाहिए कि देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सेटलमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन टू प्रोसीड, inform her about the interim measures and must adhere the timeline. जो timeline है वो भी कमेटी को adhere करनी चाहिए. There are certain myths about the sexual harassment. The sexual harassment is rare, but the fact is sexual harassment is extremely widespread and touches the life of 40 to 60% of our working women. Statistics of the General Electronics in 1990 indicate that there were not many complaints about sexual harassment. However, management of the company did not feel complaints, and instead they were quite worried because the smaller number of complaints did not prove that there was not sexual harassment, but instead very few people choose to report the sexual harassment. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी औरतें हैं, वो कहती चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते, तो वो इग्नोर नहीं करना है. You have to raise your voice. Second myth about is, if the harasser does not do with the intentionally, then it does not constitute a sexual harassment. जैसे कि पहले था कि
जो हैरेसर है उसकी इंटेंशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज कि उस लड़की ने या उस कंप्लेनेंट ने या वो जो विक्टिम है वो कैसा फील करती है, उसको कैसा फीलिंग है. द थर्ड myth is women who are sexually harassed generally provoke harassment by the way they dress and behave. There is no smoke without fire. जैसा कि नॉर्मली आप सुनते आ रहे हैं मीडिया चैनल्स में भी, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी बोल देते हैं कि लड़कियां प्रोवोकिंग क्लोथ्स पहनती हैं और ये सब है. तो दीज आर द myth, but this is the partly out of the stereotype traditional view of a women are troubled and partly is excuse of an harasser fight for themselves. Studies have found that the victim of a sexual harassment vary in a physical appearance, type to dress, ages and behavior. The only thing they have in common is that over 99% of them are female. The fourth myth is if you ignore harassment, it will go away. The fact is, it will not. Harassers generally will not stop on their own. Ignoring such behavior may even be seen as an agreement or encouragement. So normally, क्योंकि ये corporate का part है, so I just quickly explain it. Agree or disagree, HR of the company has to be active role in IC and proceeding. Technically, no. But if you have less women or a less number of employees, then yes. But in that case, she also or he also be adhere of the this confidentiality clause and bound by all the IC rules and regulations. The external member should always be in favor of the complainant. No, it is not. They are unbiased. But हाँ ये होता है कि क्योंकि complainant को लगता है बाकी मेरी कंपनी के employees हैं वो biased हो सकते हैं, but ये outsider है तो मैं इससे ज्यादा खुलकर अच्छे से बात कर सकती हूँ. Even I recently also experienced the same when I was conducting such inquiry. IC cannot call of the confidentiality record files of the company during the proceeding. No, they can call. They at that time they are like in a committee. उनको civil CPC के अंदर they have a power like a court. वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे. धन्यवाद.